After this, you will get discovered. तू होगा चमकता सितारा, but after death. So don't think of. नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? भाई आप सब बढ़िया रहना बच्चे। तो गाइस, आज हम फिर से कुरुक्षेत्र के नए रैप बैटल पे रिएक्शन बनाने जा रहे हैं। इसमें आपको जो देखने को मिल जाएंगे, जो रैप बैटल होने वाला है, दैट इज बिटवीन आइटिश, आई होप मैंने नाम प्रोनाउंस सही किया हो। सो ये जो है, ये टीम नेपाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड EMF जो कि टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दो रैपर्स के बीच में एक हिस्टोरिकल बैटल होने वाला है। हालांकि जब मैंने इनका तो थंबनेल देखा ना, जहाँ पे अभी जस्ट प्रीमियर पे लगा हुआ है, तो मैं थंबनेल देख के ना आई वाज कंफ्यूज्ड फॉर अ मोमेंट। आई थॉट कि भाई ये संदीप लामिछाने क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आई मीन वो कब से रैप बैटल करने लगे। बट उनकी जो फोटो है ना, काफी संदीप लामिछाने से मिल रही है, आइटिश भाई की ना। तो आई वाज लाइक, भाई टीम नेपाल वो भी रैप बैटल में, ओह माय गॉड, इट्स गोना बी फन। बट भाई फिर ध्यान से देखा, नहीं भाई ये आंखों का धोखा है मेरे। तो भाई आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रैप बैटल बिकॉज लास्ट टाइम आई नो नेपाल वन द बैटल। थोड़ा दुख हुआ था उस टाइम पे, आई मीन क्या बोलूं यार। बट आज फिर से हम टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। इस बार EMF भाई को सपोर्ट करेंगे। हालांकि मैंने इन दोनों के नाम कभी सुने नहीं है। दिस इज माय फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू देम। सो लेट्स सी। अभी 3 मिनट रह गए हैं, अभी तक वो प्रीमियर हुआ नहीं है। सो नोटिफिकेशन मेरी ऑन है एंड आई एम एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, होना भी चाहिए। और बैटल का नाम तो आपको मालूम ही है, इट्स कुरुक्षेत्र। लेट्स गो गाइस। अभी भी 3 मिनट है, तो वेट करते हैं, आपको मिलते हैं तुरंत। लेट्स गो। डिस्क्लेमर पढ़ लो। ये वही डिस्क्लेमर है जो पिछली वीडियो में मतलब बताया था कि भाई इसमें आपको मतलब डिसरिस्पेक्ट अगर आपको फील हो तो भाई वो होना मत, डिसरिस्पेक्ट, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट दैट। भाई ये म्यूचुअल है भाई सब कुछ। भाई प्राउड टू आई थिंक मेरी आवाज़ ज़्यादा है, तो मेरी आवाज़ कम करनी पड़ेगी। 60 मिनट ठीक। Kurukshetra, the war has just begun. Let's go. Sound check कर लेते. Okay, here we go. Introduction देखें guys. It is what it is. Representing Nepal. Yo. With your introduction. भाई बस. I don't know, I'm stupid and I'm crazy. And I don't know, I'm here man, Nepali people. भाई और क्या है, नेपाल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उतनी बड़ी बात है भाई मेरे लिए। बंदा कह रहा दिस बैटल, मतलब इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं मेरे को। हाँ वाह। So for me, like it was like opening science book for commerce student, है ना? तो science के chapters है, what is EMF and all that and यो कुराहरू थियो। But yeah, it was fun. अब it was like a science class to me. अब एउटा कमर्स स्टुडेन्टलाई हैन, what is कमर्स स्टुडेन्ट है गाइस, कमर्स स्टुडेन्ट। मजा भयो। इट वाज लाइक नयाँ कुराहरू, धेरै कुराहरू थाहा पायो अनि डिफरेन्ट डिफरेन्ट कन्ट्रीमा जस्ट हाउ इट हैपन, हाउ इट गोज, त्यो कुराहरूसँग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम इस बार इंडिया जीतेगी। मुझे ऐसा फील आ रहा है भाई, कंटेस्टेंट को देख के मुझे ना ऐसा फील हो रहा है, मतलब बैटल समझ में। थोड़ा नर्वस दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा नर्वस दिख रहा है। देखिए सिके धेरै कुराहरू, ओके दिस इज द थिङ आई क्यान अट्याक भन्ने कुराहरू भयो। I was prepared for this battle. My god, I've just watched Aitish rap a lot on YouTube. Okay. Has a lot of I've watched, actually, you know, one of the greatest things I've done is watch fucking Crazy's reactions, man. The shit helped me a lot because you know these a lot of Nepali words I couldn't get, and Aitish has this thing about, you know, तोड़ दे आज तू, फोड़ दे भाई, फोड़ दियो भाई आज। In English, but it's actually just Nepali, so it was kind of hard. So whatever I could, I've used my notebook and भाई नोटबुक क्या भाई, आज हिला देना है नोटबुक, फेसबुक, यूट्यूब सब हिला देना है आज। I've used ChatGPT a lot. fed it Aitish personality and I asked it to present AI को फुल इस्तेमाल किया है भाई ने 1000 times. Let's and go India. That was my training for writing the final verse. Okay. Pressured on representing the, obviously होता है pressure तो होगा यार.
प्रेसर छ पनि छैन पनि आम मोर एक्साइटेड अनि इट्स फर कल्चर होइन कनेक्टिङ टु कन्ट्रिज बेसिकली हिपहपले कनेक्ट गरिरहेको हो नि त अनि त्यही भएर आम ह्याप्पी ब्याटल इज जस्ट अ ब्याटल होइन अनि यहाँ अलिकति त्यो एउटा एड्रिलिन रस त हुन्छ होइन वो त है देशको लागि भन्ने खालको एउटा पेट्रियटिजम त हुन्छ यो देशभक्ति या Oh, the pressure is really, there's a lot of pressure, but it's not sort of just intimidating. It's pressures to not fuck up. It's not that I'm not expecting anything from ITish, I'm only expecting a level up. But yeah, I don't want to fuck up, man. It's like I'm known, like that's. भाई दोनों के हाव से लग रहा है प्रेशर तो खूब इमेंस प्रेशर है इस टाइम पे I just do what I do. It's like just. मतलब बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हो आप Yeah. There's only one thing I can do is like this, just kill my opponent. There's nothing else. Oh, kill my opponent, bro. Yeah. यही चाहिए भाई यही. How do you feel about your opponent? Okay, opponent के बारे में देखिए क्या आप समझते हैं. Yeah, electromagnetic force. Scientist बन रहा है मतलब scientist. Good, but I'm Michael Faraday. डायलॉग कभी से It's been more than a decade, but yeah, battle को लागि be ready, be prepared. The best of luck. This thing I learned about him, I'm sorry for cutting you out, but it's just coming out. It's like the answer is coming out the closet. It's like I think he's gay as shit. Like he's sorry. It's not an insult. But like I just studied his bars and like the grammar tells a lot about a person. So, क्या बोल रहा भाई? I'm telling you, I don't know. I just my gaydar is active. I'm telling you. Gaydar is active. But not like not that I have a boner. But I'm gonna go hard though. Oh भाई साहब लग रहा है अच्छा बैटल होने वाला. What do you think about think the outcome of this battle will be? Okay. क्या होगा इस outcome इस battle का? एनएन पुग्छ तर जस कह रहा है एक ही राउंड में हो जाएगा. It's like 3 rounds and yeah, like we going hard. Yeah. We have to go. Yeah, I like it. I like it. On that same page, you know? Yeah, same page. Yeah, we can go bar for bar. About it's War for war जाएगा भाई. War for war. Prove myself, you know? Outcome of this battle is gonna be out of the closet. So I think yeah, ITish gonna come out the closet after this. बंदा तो वही चला गया है बंदा. Final message to fans. Okay, fans के लिए क्या message है इनका? Let's hear it. Just keep watching rap battles अनि like त्यो अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाउनु पर्यो यो कुरामा because like त्यो यो कुराहरुबाट this is rude actually भन्यो भने चाहिँ this is rude so the thing you're listening in mainstream media त्यो कुराहरुको रुट यो हो त्यही भएर just you should like के भन्ने अब यो कुरासँग चाहिँ कनेक्ट भयो कुराहरुबाट चाहिँ नोन भयो भने चाहिँ लाइक द रियल शिट बुझिन्छ त्यो अनि इट्स भेरी हार्ड त्यो हुन्छ नि यो पेडेस्टलमा बसेर गर्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ अब आर्टिस्टले के गरिरहेछ त्यो कुराहरु बुझ्नु लाइक ट्राई टु हैन फिगर आउट अनि लास्ट थिङ आई वान्ट टु से टु माई फ्यान्स इज stay happy. Always, man, please keep your eyes open for all the punchlines. Always keep your mind active. That's the reason why we do this, so that y'all become active. And this goes for every battle rap. Okay, भाई आगे खोल ली मैंने भी. Man, just enjoy हम भी देखेंगे guys. Enjoy it really. Let's see guys. Let's go India. Think. So keep doing that shit, man. Keep showing love to everybody here and keep supporting battle rap. Come live and you have to watch battle rap events live. I know most of y'all will be watching this on video when it comes on YouTube. Maybe same मैं भी वीडियो में देख रहा हूँ. Battle rap is the craziest thing you'll ever witness. So please come for the events. I hope कभी opportunity मिलेगी तो definitely जाएंगे. It is versus EMF. Introduce yourself, it is. Yo! What it is? Straight from Nepal. What's up? The atmosphere is crazy, man.
Hey yo, this is EMF, Anmol. Shoutouts to B3 Elsewhere, Tarbhatri Talkies. Special shoutouts to Arunachal Pradesh and Barfare Entertainment. Shoutouts to JT and Shikamaru of the East for this dope ass necklace. It's a tribal necklace. I'm supposed to get his head. My ring needs some blood. You know what I'm saying? It's the first sacrifice today. Let's go. भाई अभी I got my स्टार्ट भी नहीं हुआ you इंट्रोडक्शन want to say something? So, first of all, ओहो आई लाइक द एग्रेशन आईज में देख रहा हूँ, वो स्पार्क दिख रहा है, वो स्पार्क दिख रहा है, आज धो डालेगा भाई, ये ऐसा लग रहा है आज, we won! ये वो धो डालेगा मुझे ऐसा लग रहा है आज। आइतिश And this You're gone. event was You're gone. to the legend. Keep it silence! So, let's get it. रेस्ट इन पीस यामा बुद्धा। Pointers? Or EMF is going first? Yeah. So, No. For the coin toss. Yeah, of course, man. चलो आज न्यू नीचे भाई। Heads. so Get it. I like the attitude of EMF ना, इनका attitude लग रहा है आज, बिना attitude भाई। वो नेल पॉलिश लगा रखी है बंदे ने। I don't give a fuck if Raja Kumari shared your track. I hope you prepared your rap. We're on different levels. Our approaches show our gaps. You're always in the mind state to overtake. I just take over, man. Itish. How you gonna fight this? This feels like home. I'm about to take a nice shit. Came here to dump it from Bombay duck or turn into fried fish. You should be deserted for not even being a side dish. Your presentation makes me wanna, your preparations make me wanna scream in a high pitch and wake up everybody in Nepal on their night shift. I switch to light work in a space race where time kills. So bored of the scoreboard, I'm losing my thrill cause you were left behind the moment I decided to ride this. Check out your privilege, you're type rich. That's why you can afford to say why quit. After this, they'll only see defeat after I point out he got nice kicks. Hey. He always knew the next step. It was to get Rokra. Only Dig Brum in his songs. Otherwise, in the industry, he knows every kopcha. Interviews, PRs, photo shoots, this is Rochka. No hera fairy business. In commercial language, he's a Seth. Just Totla. I mean, speak nothing on a morcha, but come ready for war like a Gorkha. I'm in case of emergency, I came here to break his glass house down with Oprah. You NRN type wannabe desi hip hop artist. He's not from Pokhara, he's from Pokhara. I mean, his setups are in English with an accent, but rhymes are from a Jhopra. It's time to accept that he was never a dal bhat power chokra. It's time to accept that he was never a dal bhat power chokra. His business mind's the reason why Nepal's national dish about to be dhokla. I asked him what's his favorite restaurant from around. Pizza Hut and KFC is all he found. Who thinks I came here to get myself served? What the fuck's y'all on about? I'm the boss at this table, waiter. Pachi khana lao. Hey, I hate us swinging arms around even though he came from out of town. Not here to disappoint them. You won't catch me when the guard is down. See, my friends think I am brave because I watch men. You're Bahadur also. You're Bahadur also, you watch men. So what I'm saying is, when shit goes down, he'll probably lay low. Before the dough is in the oven, he wants the mayo. He wants the fruits without the roots. Well, not today though. He wants the fruits without the roots. Well, not today though. He'll sell out a whole forest for paid promotions. That's all he cares for. But I stick around the streets even when I'm tired. It's the game like Don DeBayo. It's round one. ओके अच्छा था और इंग्लिश और बीच में एक पंच लाइन नेपाली में बोलिए ना। round one it is. It's all Good, you. good, good, Let's good. go. Let's hear Aitish now. Yo! Okay, he want to fight me. आजा तुझे हाथ दूं. आजा तुझे हाथ दूं. He said Totla right. आजा तुझे 50 लाख दूं. See? तैले खोली जुत्ता स्टेज टेक्दा. Since यो मन्दिर हो अनि म भगवानलाई आउनु पर्छ खाली खुट्टा भेट्दा. Easy. Okay. I'll fucking show him place today. He talk about side this and all that, but you're not safe today. Okay, let's talk about it, right? Let's talk about it. He pronounced my name. He didn't pronounce my name properly. He called me Aitish, thought I wouldn't like it. But मैं नाराज नहीं.
The way he say it is in British, I guess India को मिली नहीं आजादी. Okay. मैंने भी आइतिश बोला ना. Let's talk about it, Dave. I'm fucking prodigy. Acknowledge this. I'm like Muhammad Ali. You did same mistake like Aaron Terrell. These punches move so speed. All you see is defeat. You can't read this brain in the middle of the game. I'll be punching in your face and ask you, what's my name? Huh? What's my name? What's my name? Okay. Let's talk about his name. आइतिश okay. आइतिश बोला तुम. Really, dog? You name yourself electromagnetic? Are you serious? But after this battle, your name will make more sense because in field, EMF will be invisible. Your vision weak. You still need that clarity. Okay. Since EMF need source, इसको लगता double battery. You've been on a scene since 2010, but nobody know your name. You dedicated a decade, denied by DHS. Deep down, he's depressed. He's dealing with delusional despair. तर तँलाई माथि लान्छ आज यो ब्याटलले. After this, you'll get discovered. तू होगा चमकता सितारा, but after death. So don't think of smoke. Don't think of smoke. You lost induction. Okay, that is. When these mag move around your head, तेरी दिमाग की बत्ती जले. That's law of induction. That's law of induction. So today, I'm godfather of EMF. You can call me Michael Faraday. We already know what he's going to say. I've been here for a decade, bro. Shut up, bitch. You couldn't make it work. जब सारी की सारी DHS को मिली exposure, ये अंदर रहा जैसे petticoat. You still not ready, bro. Last time someone asked EMF for a feat when he was doing pedicure. Beti chod, let's talk about some fact. This battle was on 13. There's irony in that. Since we bring you from India, you have to deal with the tax. You have to deal with the tax. तँलाई मार्न मलाई कर लाग्छ. सीमा पार गरिस् यार. These guns are like revenue department. I mean, these guns are like Bansar when they charge. It sounds like bat. Oh, okay. Nicely done. Okay. निशाना निधारमा चुक्दैन हाम्रो. मेरो ट्रिगरमा औँला एउटा उखान छ राम्रो. सिधा औँला ल्याउँदैन घिउ त्यसैले गर्दैछु म बाङ्गो. Okay. I'm dope. यो घोडामा छैन लगाम. यिनीहरू सोच्छन् हामीलाई कसरी दबाम. Man that trigger me, म सोच्छु ट्रिगर कहिले दबाम. हम तुम्हें इतने छेद करेंगे तो हेरी रासोस दबांग. Y'all slipping on me on street. Fuck, then I'm driving like Salman. I'm driving. Then I'm driving like Salman. I'ma make sure this wing won't let slip anyone like this shit is alarm. Okay. This is good. Hey, I'm a fucking monster. I'm a fucking monster. I had to open the cage. I really took my shoes off. I had to show them my soul meets the stage. Okay. Hey, yo, I'm sure you say EMF and you can't see it. Well, that's the fucking point, bro. The point is to go feel it. Fuck it. Nice. I'm really fucking mad today. This guy is Michael Faraday, but it's so fucking sad he's getting killed on a Saturday. Hey, yo, Aitish, are you stupid? Are you stupid? Because I'm not saying this because I don't think that you're smart. I'm only saying this because I took a look at your bars. I mean, we'll need rocket science to explain its stuff. He raps like intelligent. Life should be afraid of us. Spotlights beaming on Aitish. Aliens should take it up and do research on his cranium to tell us exactly what he meant by wanna know circumstances. You'll see radius. Bro, are you stupid? Did you confuse circumference and circumstances? You will use your circum while making references and leave yourself embarrassed? In your area of your circle, 2 pi, yar. Square up to this challenge. If you don't have history with this arc, you wouldn't understand it. Life comes a full circle. I ain't lying, I'm a tangent.
My spirit left my body a long time ago. Every battle is a plank shit. Beats attract a different magnet. Lyrics slap and leave a handprint. What the fuck did this man bring? The audacity to call someone gay while acting like a Sigma. But battling with his better half, he literally said, Mero dick tero lipma. This is good, right? It's not about if you're gay or not. It's about the kitna. So are you straight? Are you straight? So सीधा सीधा लिखना. Hey, crazy. You're stupid and you're gay because you're not straight, you're not smart. I have a small test to show what is what. Suck my dick without getting hard. Hey yo, I'm a lovable guy, man. मैं बस आज hater हूँ. Close his file in 32 bytes. मैं इसकी दाद देता हूँ. See, I'm just trying to break down your soul food in this. His flows are bitten, so his music is easier to digest with a better mix. Swallow your pride. You're looking really weak. Ego dissolves with acid. In the belly of the beast, you'll see a different hell. In the belly of a beast, you'll see a different hell. If your spirit's not high enough to make your liver swell, he puts his songs on conveyor belts. Now his supply chain is tighter. He thinks that's what makes him a better writer. When projects move through the pipeline at the speed of geofiber, hey, my lyrics don't spiral. His lyrics don't spiral. They swirl, they smooth, and they shine. See, I'm as visual as I could get, but until he drops that album from his discography, I wouldn't call it no good shit. Hey. His life is a movie, comedy. That's what I'm showing here. This guy is so stupid. His N-word is pneumonia. Call me when you get it. Oh. It's time. You done? Okay. Round 2 का. It is. You got a rebuttal. Second round on you. Let's talk about this shit, right? I barely. Okay. Let's address the elephant in the room. हाँ तो दिखता हाथी जैसा. But that shit doesn't matter. After losing this battle, you weren't able to chin up. These bars are so far, you can't even handle. You know what EMF stand for? What? Nothing. His knee hurt. He can't even stand up. He's every move flatter. जब राजासँग हात्ती हुन्छ flip. Damn, you'll see the castle. I'm playing this shit like a Magnus, but I'm brutal like Charles Manson. That's how history repeat. This is not first time Indian getting captured. Fuck your reaction. You think I'm zero? Yeah, with infinite factors. EMF, your songs and your energy are like same. They came from elsewhere. You don't have your own channel. But they think he's a battle god. Nah, you're prey to me. Today I'm about to cross line. You'll get crucified. I'm gonna nail this battle. So how you gonna deal with this word? Stand in front of kiss words. When I pull out my K from front, I can take your life easy. I become your Ishwar. Ishwar. So make sure who you're messing with. मसँग battle अर्थात मृत्युसँग भेट हो. Hey God! You know why we bring you here? Because we want to collect his ashes. We want someone to collect his ashes and take home. Okay. I hope Nasta won't kill you. तुम्हें ले जानी है इसकी अस्थियाँ. So stay strong. किनकि यो battle हुन्छ दर्दनाक. यो battle हुन्छ दर्दनाक. Shot हान्छु बारम्बार यो सन बस्ला कभरमा. यो battle को वीडियो यति शर्मनाक ये निकलेगा नहीं घर के बाहर. अब ये सोचे एक क्लिप से कैसे लाइफ हो गया अंधकार. Okay. This is good one. They say you have to nominate एक रैपर जिसके मैगी जैसे बाल हैं. It will just need 2 minutes to cook. I'll dominate. There's no debate. You can find the difference here. Where I'm polishing my skill, he's polishing his nail. तू करना वीडियो अच्छा, पर इसका खर्चा हो जाता मैनिक्योर पे. See, it's like different vision, same game. I want to see opposite like logo of Chanel. I'm that ruthless professor who would give you marks with pen till you get passed away. When I'm saying eliminate EMF, I made that E silent, motherfucker, you're left dead. But they said you can't hit him. This is fight of word. I don't smoke. If I smoke,
थाहा हुन्छ कसमा कति दम एक punch can make your whole body lean like it's irrelevant. इटली को I mean, this guy say मैं तुझे दाद दूंगा, right? Okay. इस बैटल के बाद तू खुद ही मुझे दाद देगा, तेरे पास सिर्फ बाकी होगा गम, तू भूल नहीं पाएगा ये पल, bitch, you will never be able to smile because of her teeth. Time. Last one. Hey, so he. भाई टू बी ऑनेस्ट विद यू सेकंड राउंड आई गेव इट टू, मतलब मुझे लगता है कि भाई मेरे हिसाब से टू बी ऑनेस्ट विद यू जो है EMF ने अच्छा किया है। टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे ऐसा लगा EMF का मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। आई नो उनका थोड़ा शॉर्ट था, जो इनका जो था जो इतिश जो भी है भाई, इनका थोड़ा लॉन्ग था, बट भाई मुझे लगता है कि EMF ने अच्छा किया भाई इस राउंड में, मेरे हिसाब से भाई अच्छा किया। मतलब टक्कर तो फुल ऑन दी है भाई आतिश ने, इनको एक तो एज है भाई कि हिंदी पता है उनको, हिंदी में आता है, तो भाई थोड़ा सा एज है नेपाली जो रैपर्स को इस बात में, बिकॉज जो इंडियंस हैं उनको नेपाली उतनी मतलब आती नहीं है, मतलब इतने बोलना आती नहीं है, तो थोड़ा सा वो रहता है भाई, थोड़ा सा ऊपर नीचे ये चीज़ रहती है। तो इसमें थोड़ा सा अपर हैंड है नेपाली रैप आर्टिस्ट जैसे कि आतिश, जैसे कि पिछली बारी में MC कोड बोल रहा हूँ, पिछली बारी में अपने नेस्टो भाई थे, उनको थोड़ा एज था इस बात में। बट भाई टू बी ऑनेस्ट विद सेकंड राउंड गोज टू डेफिनेटली वो है EMF. The king around. So 1-1 हो चुका है। He's the king around. I attacked him straight. Go make that face. Once they checkmate from every angle, the rook comes here to take his place. Atmandu, ami Khatmandu. गली में खेलेंगे दिलगिली दांडू. आमी नाही कोई अंडू पांडू. आमी एक नंबर चा गांडू. I just battled in Arunachal Pradesh. I'm well equipped with bamboo. This shit is a dull blade versus a sharp tool. A pirate versus a daku. A fashion magazine versus cartoons. Achhi versus Aptu. It's magic when I write. You'll agree with this part too, because I can flip his favorite fish and turn it into his favorite song, dude. His favorite fish is tuna. And his favorite song is Natu, Natu, Natu. Hey, yo. You get fucked down south anytime. I keep it unbuttoned like Sandanam. This first copy, Hanuman kind, didn't want to be the big stepper since I landed like Jajantaram Mamantaram. The start was too funny. The end was too funny. Presently, it's a rap. I mean, your end, too funny. Hey, I got a gift for those who wanted one-piece bars. I forgot them like one dumb truth. You all know what rhymes with gum fruit? Cancel that thali, 2x3 chicken triple और एक lung funk soup. Straight up disrespect, bro. You NRN type wannabe desi hip hop artist, you are a bimari. He only knows kabate kamalan, verbate vaja kumavi. You got no soul. Your whole goal is paise kamatu. I mean, that's the reason I came here to beef in every street like tol ma baise kamasu. Hey, That is good भाई। stay in your lane और चालान भरो. मुंबई से आया तेरा साहब लौड़े साहब को सलाम करो. Hey. Stop playing the gatekeeper with your childish games. I wonder when you're growing up. Swallowing the hand of God is still not a good enough reason for the gang signs you're throwing up. And hey, speaking of signs, if you don't see them, you're insane, man. Like this time you tried to go international and Pokhara saw a plane crash. This year you tried to go international, Nepal went up in flames, man. It's like the universe is trying to say that, stay back, because destruction always meant to come here and shake hands. I mean, I stepped in your birthplace like an earthquake. You might die before I open up the third gate. Show you what's beyond the gate of life on his first day. I believe in reincarnation. So I believe today, somewhere it's your birthday. Hey. See, I can't explain this with my artist brain. How his life ends with me pouring out my soul, but catharsis may. Hey, I asked him for a match. He said nay. I got the ick in between my chickne. Hey, never see me and you in the same light. I dish. I'm about to show you what stage fright. I dish. It is what it is. I don't even care about you enough to say your name right. That is good, that is
उसको भाई बंदा ने नेपाली में ट्राई किया ना I don't care if ह्याची आई मडक्यात पादली और पेल्यात हगली. ह्याची आई टकली आणि बाप नकली. ह्याची कीर्ती मला बघून आत लपली आणि खात बसली. भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को खुद नहीं समझ रहा. Hold up. The bars that I got will shut down Beta House Dhanda. His bars were so fucking childish, just like that Mickey Mouse changa. It's time, bro. It's time. ओके गुड वन भाई, गुड वन. राउंड 3 का शुरुआत तो अच्छा हुआ भाई. लेट्स सी कि अब IT इंग्लिश जो है वो क्या लेके आएंगे. What's this, bro? Huh? What's this? Nail paint, huh? But I ain't gonna shame you. I was expecting someone tough. That ain't you. Since you have been in your forehead, it's easy to aim you. That is good. Okay. Talking about my country, this, that, right? Okay. Security guard, gatekeeping. That's fucking shameless. Many Nepali brother like me is standing in your gate holding gun. Tabi tu sor para chain se. Talking about this. Well, that's not funny. Ye dikhta Ravi Gupta jaisa. But that's not funny. Let's talk about some gun bars, right? These guns so dirty. Ye tujh pe daag denge. Detergent could do nothing. This gun got sad story. When they start talking, you'll feel pain in your chest because it's going to be heart touching. Okay, I heard he had a heart problem. तुझे मिलेगी दया, अनमोल है बेचारा. This victory is like Babita, you'll never get her. बिना पेसमेकर ये सांस नहीं ले पा रहा. इसके छाती पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ये तारक मेहता का जेठालाल. You know what's my favorite song? ये मांगे जान की भीख, बोले दिल धड़कने दो. मैं बोलूं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. See, this bitch is so broke, you will never get notes because you'll never be sharp. Still dumb, then E sharp. These bars will hit hard. I don't even have to punch you. Single tap can do sound off. Double tap can pop your heart out like I'm using Insta. Okay. See, so you want to fight us for title? त्यसो भए आइज. यो टिना फलामोरा बत्तले भेट्छ जोखी जोखी आइरहनु. यो टिना फलामोरा बत्तले भेट्छ जोखी जोखी आइरहनु. This pain is unbearable. ताफैलाई पुसान्छस् बाहिर. This pain is unbearable. ताफैलाई पुसान्छस् बाहिर. This burden you have to carry it maybe for 9 months. You can see this man die, little baby coming out of him. This delivery is going to break bone like I'm talking about childbirth. Okay. See, they say he's old with damn age, but I can give you damn age. किनकि रगतमा बग्छ साहस. Hey! I owe you death. See how I can kill you with these vowels. Damn! म बोल्दैछु हरेक नेपालीको आवाज. Damn! इति सोचे भन्दा बढी पागल. Damn! This dam was the threat to open all the gates of Kosi barrage. Okay. Now I got it the point. हेर कसरी डुब्छ तेरो भारत. त्यसैले नजास हाम्रो वीरता. बुद्ध was born in Nepal. तर थाहा छ हामीलाई के हो हिंसा. Nepali इतिहास गोर्खाली, we always been das. Your history, you have been das. Right? You have been das. I could have fight with 3 of you. 1 versus 3. This battle is so personal. जस्तै म लडिरहेको छु ल्याउन काला पानी लिपुले काला पानी भाइ साहब. Okay. Damn! यो हेरिरहेछ मलाई. के भइस क्या लाटो. मेरो बास बुझ्न तँलाई गाह्रो, तर लाइन पिच्छे भेट्छस् बारहरू जस्तै यो ठमेलको बाटो.
It's okay. Last fucking. I'ma tear you up. कसरी च्यात्छु पाना हेर म काबु गर्छु खेल यस्तो ऱ्यापरहरू गायब कस्तो जादु गर्छु हेर यु नो आम हियर वर्षौंदेखिको मेहनत र डेडिकेसनले आई लर्न अ लट अन स्ट्रीट जुन सिकाएन मलाई कुनै स्कुल अनि एजुकेसनले स्ट्रेट फ्याक्ट नो क्याप आई एम मास्टर अफ द स्ट्रीट आई गेस टुडे इज माई ग्रेजुएसन डे ओके तो गाइस बता देता हूँ मैं थर्ड भाई ये थोड़ा सा मेरे को कंट्रोवर्शियल लग रहा है मतलब थोड़ा बहुत मैं कंट्रोवर्शियल डिसीजन लूंगा इसमें आई थिंक नेपाल विन दिस राउंड भाई बिकॉज द थिंग इज कि जो अपने जो थे ना अपने जो EMF भाई वो ठीक है उन्होंने अच्छा था राउंड 3 उनका बट उनका शॉर्ट रहता मतलब उनका ज़्यादा था नहीं उनका मतलब रैप ज़्यादा था नहीं बट जो इतिश जो भी है भाई इनका जो था ना इनका रैप था इनमें पंचिंग लाइन भी अच्छी थी थोड़ा लंबा भी था नेपाली हिंदी इंग्लिश सब था इसमें तो भाई इसके लिए आई थिंक द थर्ड राउंड गोज टू नेपाल एंड ओवरऑल नेपाल वन दिस बैटल ऑल्सो भाई क्या हो रहा है भाई दिमाग खराब हो गया मेरा बट भाई आई थिंक EMF ने अच्छा परफॉर्म किया टू बी ऑनेस्ट विद यू हाँ उन्होंने ज़्यादा हिंदी में उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि वो मराठी में बोले थे बट नेपाली में भी उन्होंने अच्छी पंच लाइन मारी है भाई अच्छी पंच लाइन मारी है यू गॉट अ गिव इट टू दैट कि EMF को भी अच्छा EMF ने अच्छा परफॉर्म किया बट आई थिंक उनका थोड़ा शॉर्ट था हालांकि लाइन्स जो पंच लाइन थी वो बढ़िया थी बट शॉर्ट मेरे को ऐसा लगा ओके सो जस्ट मैंने अभी ये रैप बैटल देखा और आपको बता दिया मैंने अपना रिजल्ट की क्या है इसका रिजल्ट आई थिंक परफॉर्मेंस दोनों ने बहुत बढ़िया दी थी रैप बैटल बहुत बढ़िया था बट जो पहला जो कुरुक्षेत्र हुआ था MC कोड वर्सेस नेस्टो का वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था एज कम्पेयर टू दिस रैप बैटल EMF ने अच्छा परफॉर्म किया एंड सो इज इतिश जो है उन्होंने बट द थिंग इज कि भाई नेपाली रैप आर्टिस्ट को यहाँ पे अपर हैंड है भाई अपर हैंड है यहाँ पे फर्स्ट रीजन डेफिनेटली नेपाल में हो रहा है तो क्राउड जो है वो मोस्टली नेपाली होगी तो सपोर्ट जबरदस्त होगा नेपाल को इंडिया को मोस्टली मतलब रेयरली होंगे इंडिया के कोई जो वहाँ पे जो होंगे जो इंडियन सपोर्टर होंगे तो रेयरली ही होंगे वहाँ पे तो उसका एक एडवांटेज है जो रैप आर्टिस्ट है नेपाली उनको एंड द सेकेंड थिंग इज कि भाई जो नेपाली रैप आर्टिस्ट का एक एडवांटेज ये भी कि उनको हिंदी में भी उनको वार्स वो दे सकते हैं अच्छे से तो ये एडवांटेज है उनको और वो हिंदी में बहुत ही ज़बरदस्त बोल रहे हैं वार डाल रहे हैं सो ये एडवांटेज भी उनके लिए ही है सो इस वजह से भी आई थिंक ये जो रैप बैटल है वो ज़्यादातर नेपाल की तरफ ही झुक रहा है बिकॉज नेपाली जो रैप आर्टिस्ट है उनको एडवांटेज है इस चीज़ में बट भाई EMF ने अच्छा परफॉर्म किया भाई अच्छा परफॉर्म किया लव्ड इट भाई हिज परफॉर्मेंस वाज गुड भाई इंग्लिश में थी तो बहुत अच्छी थी इतिश ने भी बहुत अच्छा किया भाई बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड दोनों रैपर अच्छे थे और ये जो लिपू ले काला पानी ये जो बात उठ रही है एंड आई हैव रेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में मैंने भी बहुत रिसर्च करी है एंड कंट्रोवर्शियल है चीज़ ये तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं इसमें भाई मैं फंस जाऊँगा बट द थिंग इज कि भाई मैंने एक इंसान की डॉक्यूमेंट्री टाइप देखी थी उन्होंने नेपाल के हैं उन्होंने बताया था लिपू लेक के टाइम पे जब जो सौरभ जोशी जैसे ब्लॉगर गए थे वहाँ पे तो उन्होंने बोला था कि काला पानी लिपू लेक ले भी लोगे लेकिन वहाँ के लोगों को जो फैसिलिटीज़ हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड करी है वो कैसे पहुँचा पाओगे जब अपने देश में जो नेपाल में काफ़ी लोग वंचित है उस फैसिलिटीज़ से तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का तो ये मैं बोलना चाहूँगा बट भाई पहले बता रहा हूँ कंट्रोवर्शियल चीज़ है आई नो कुछ लोग अपसेट होंगे तो इस पे मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं जो जिसका है उसको मिलना चाहिए एंड ठीक है बॉर्डर डिस्प्यूट हर जगह होता है भाई हर जगह ही है बॉर्डर डिस्प्यूट लैंड डिस्प्यूट हर जगह ही है भाई ये तो वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स है इसमें तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते एंड इस चीज़ से ना नेपाल आगे बढ़ेगा ना हम आगे बढ़ेंगे बिकॉज ये चीज़ तो भाई एक पॉलिटिकल मूव बन चुका है अभी तक जो भी पार्टी आती है वो कहती है नेपाल में बता रहा हूँ मैं कि हम लेके रहेंगे बट नहीं ले पाते लेकिन उस चक्कर में जो नेपाल को जो जनता को जो बेवकूफ़ बनाते हैं जो करोड़ों का करप्शन करते हैं एंड जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है नेपाल के जो लोगों को वो नहीं प्रोवाइड करते वो होता है तो क्या बोलूँ भाई मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई कंट्रोवर्शियल हो जाएगी ये चीज़ आई नो जिसका जो है उसको मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए तो लेट्स सी भाई तो गाइज मेरा रिएक्शन आपने देख लिया आई नो मैं रोया बहुत क्योंकि मैं क्या बोलूँ भाई अब हार गई इंडिया फिर से यार
अरे भाई मेरे को ही भेज दो यार, मैं ही चला जाऊँ क्या बैटल करने, मिले ना लेवल तिम्रो बाउ बुला ए ऐसे बोलूंगा फिर मैं। भाई जी बॉब की याद आ गई भाई, बढ़िया रैपर है। लेट्स गो गाइस। तो गाइस ये था मेरा रिएक्शन ऑन दिस कुरुक्षेत्र बैटल, रैप बैटल। अगर आपको पसंद आए तो मैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ, बाय बाय एवरीवन। तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही चाहता और मुझे तड़पाए। सिंपल सिंपल कंचा का डिंपल पटने गाला, उहू उहू मन परे मन परे मन परे सारे मन परे ये। अरे यार कितना, अभी 1 मिनट रह गया, 1 मिनट टू गो। ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना।